सोना रोड रहने के लिए तो बड़ी नॉट अ वेरी हैप्पी प्लेस है, बट वीडियो में कितनी अच्छी लग रही है. Like, I'm going to office after at least 3-4 months. I don't know the lineup of people who are going to be there for the shoot. I'm quite excited. So background में कपड़े दिख रहे हैं, ये मुझे सुखाने हैं अभी. I might try my best to be as fancy as possible ना, but मेरी reality तो यही है. ये बाल्टी. Anyway, coming back to the point. I'm headed to office. I'm really looking forward to meeting some of my colleagues. Don't entirely know कौन होगा. I think there'll be Sukriti there, Shireen, Prapti in all probability, Ankita, and maybe Karan and Aaron. Hopefully, I don't know. Hopefully, Sampu also. Anyway, so yeah, let's see how it goes. Sona Road, don't mind. It's very active. I hope I can make some nice content with them after all these months of seeing them through a screen. Anyone who's sorry, don't mind me. मैं बस नहा के निकली. चाहे मैं कितना भी कोशिश कर लूँ to do things on time, I somehow always end up getting late. Last I checked it was 12:30. अब 2:15 हो गए हैं. मुझे लंच करना है, फिर ऑफिस जाना है. How do people manage time? You know, I realized this social media is a bloodsucker, man. Like every time I get on Instagram, time ना पता नहीं कहाँ चला जाता है भैया. I also feel like maybe आजकल ना मुझे रेस्ट करने का चस्का चढ़ चुका है. Like every opportunity I get जिसमें मैं बिस्तर पे पसर जाऊँ, I take it. And then I'm pasroed for a while with obviously my phone in my hand. But yeah. इधर रुक दीजिए. आ गए हैं हम टाइम्स इंटरनेट. क्या मैं अपना बस्ता तो भूल ही गई थी. हेलो सर. हाँ जी. शिवानी. हाँ जी. Thank you. This is what Times Internet looks like. It is a huge. I joined this company in the year 2016, I guess. So 5 साल हो गए हैं almost. I started at Times Internet in the capacity of a copy editor. I was heading iDiva. It just used to be a webzine. And I was heading their copy team, and then things just changed. Now I just come to work once in a while, and I think ये pandemic ने ना वो once in a while इतना ज़्यादा stretch कर दिया है कि there are days, and I'm not one of those people जो ना office को miss करते हैं. You know, pandemic made me miss sitting at work. There were days when I would have cravings for office की बनी हुई coffee and missing like just chilling here, meeting people regularly. We may not always love hanging out with our colleagues, or we may not love them all the time. We see them every day. They're pretty much like family, you know. I have missed my colleagues, missed coming for shoots, missed using the office internet and having a desk and a chair to sit and with my colleagues around who I could like chill with, have coffee with, have chai with, banter with, you know, like ये छोटी छोटी चीजें जो इतना मतलब हम ग्रांटेड लेते हैं. Like I've actually legit missed these things. Today I'm going to try compensating for as much of that FOMO that I've been having. Anyway, let's do this. पता नहीं कितने लोग आए, चेक करना पड़ेगा. इतनी धूप है. Shrishti is going to be our writer, director, coordinator, everything. गेट के अंदर घुस चुके हैं. मैं दोबारा मास्क पहन दिया. आहा, 7th floor with my anguti. So I'm on the 7th floor. Now I'm going to go to the studio. 7th floor से एक दरवाज़ा निकलता है जो जाता है ऊपर स्टूडियो पे. That all the iDiva videos, all the Men's XP videos that you see from the studio are shot there. Hi everybody! Sukriti and Jyoti. Yeah, I'm one of those people now जो जहाँ जाते हैं कैमरा लेके खड़े हो जाते हैं. Hi cutie. Hey. The second vlog. Trying to like keep like the pace intact. क्या हो गया धर्म संकट क्या है यहाँ पे? जितनी भी अरे यार. Have it with what, Sukriti? Pasta? और यहाँ पे जो अथॉरिटी के लोग बैठे हैं कन्फ्रंट करूंगी. तो सृष्टि क्यों मुझे ऐसे मतलब आपने बुलाया नहीं ऑफिस में? अरे आप इतनी बिजी रहती. मैं बिजी रहती. Dude, what? That's the allegation जो मैं कंटेस्ट करूंगी. ये गवर्नमेंट बिक चुकी है भाई. इसका खुलासा तो हो गया रहेगा. लाइक ये है अंकित डूमरा. ये हमारा प्रोड्यूसर है. वेरी रिलायबल गाय. मुझे शूट में क्यों नहीं बुलाया तुमने? ये गवर्नमेंट तो बिक चुकी है. ये गवर्नमेंट, ये भी गवर्नमेंट बिक चुकी है. नहीं मैं नहीं बिका. आपकी अवेलेबिलिटी कम मिलती है हमें. अबे ये सबके सब मेरी अवेलेबिलिटी बुलशिट. शिवानी is always busy. ये हमारे स्टूडियो की पेंट्री है जहाँ पे खाने के नाम पे सिर्फ वाटर मिलता है. एंड somebody has done some serious spring cleaning of utensils. Guest of honor, just turn around, bitch. I love your earring. The new and skinny honey. How was the first reality show experience? Was it your first reality show? It was my first time ever on screen.
Listen, Ankush told me that you were I was just being myself. phenomenal. Yeah, but listen, you are quite phenomenal when you're being yourself. First episode, I was just like, where is the camera? Where is the camera? Second episode, I was like, bahar mein jai camera. I was just like running around on the set, being myself. Will you do it again? Yeah, for the right price. बड़ा एक्सेप्शनल क्वेश्चन पूछना है संतु तुमसे, मुझे क्यों नहीं बुलाया शूट पे? मैं क्लेंस में गई थी, अब क्लेंस से वापस आ रही हो। क्लेंस से मैं 20 दिन के लिए आई। भाई इतने में मेरे मैनेजर ने बोला इतना ही मिलेगा। Are you hungry? Very hungry. चाय मंगवा दे अंकित यार प्लीज। Are you all facing weather change like I'm facing? Yes, same. Honey, what the fuck are you ignoring me for, huh? It is the air. तो मेरा प्लान तो था कि मैं अपने मेकअप एक्सपीरियंस को भी व्लॉग करूँगी। ज्योति से हाय। बट एक तो कैमरा धुंधला हो गया, ऊपर से यहाँ पे लाइट बड़ी टट्टी है। वेव्स जो बन रही है ये बत्ती का कमाल है, ये गंदे गंदे बल्ब। Look at all this makeup. Guys, excuse the lighting, but कौन आया? तेरे बाद आई ये नहीं कि कुछ ले आओ, वैसे ही व्रत चल रहा है, सवेरे से कुछ खाया नहीं, चाय पिला दे आधा कप। आंटी अदरक के साथ लोगे या बिना चीनी के लोगे बता दो हमें। व्रत में अदरक तो खा सकते हैं। हाँ। तो फिर क्यों बचा रहा है अदरक? अपनी थोड़ी दे दे इधर। ये वीडियोस देखी मुझे अपनी मम्मी की, अपनी मासी की याद आ जाती है। व्लॉग्स को फटाफट जाके सब फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो माता रानी पाप लगाएगी। भैया श्रीन के भी YouTube चैनल को फॉलो कर लो। She started it. She has some exceptional content and Shireen is a like performer par excellence. चड्डियों में थे ना श्रीन जब से हम जानते हैं तो मैं स्कूल में थी। Just finished my makeup. You know, I've noticed this thing happens to me a lot. Like, you know, I keep anticipating meeting people who I think I can collaborate with and I don't know, make content with because they're so good at what they do. And sometimes, you know, these shoots are a great opportunity to meet fellow creators who are on the roster of the agency that I work for. I don't know if this happens with other people or not. जब वो टाइम आता है ना कुछ करने का, when you get the right opportunity with the right people, my brain just freezes. These guys are like powerhouses, okay? And I don't know, like I've realized when there's like pressure to perform, my brain just like, it's like oh but I can't. Mood nahi hai karke my brain just shuts off. It's so frustrating, you know, because I keep crying about opportunities. अभी as you might have seen इतना रोना धोना मचाया है कि मुझे क्यों नहीं बुला रहे शूट करने के लिए, मुझे क्यों नहीं बुला रहे शूट करने के लिए. And apart from just shooting, the point of meeting colleagues is that they just stimulate you to do better. You know, like it's like, you know, when you're in a creative space, sometimes just hanging out with other creative people brings out good things. But even if I prepare for those good things, my brain तो decides to like just disconnect from me. So I'm just like अब इस good things को कैसे मैं कहाँ से मतलब कौन से पुर्जे से निकालूं, कोई मुझे समझाए. One good thing to come out of these shoots is that I get to like create makeup for free, which I can like use, and I love what has been done to my eyes. मुझे घर जाना है जल्दी आज basically. I'm just gonna go back in and see how far the shoot has progressed. And now we are entering where magic begins and ends. Hi guys. Hi Adil. देखो मुझे सब इग्नोर करते हैं यहाँ पे, मैं पुराना माल हो गई हूँ ना इसलिए. ऐसा कैसे पुराना माल, ये सबसे बेहतरीन और अच्छा है. You guys, I love you. So these are the magicians behind everything that you see transpiring here. This is where all the magic that you've seen IDEVA do has happened. These people and this space. We love you for your cooperation also. Thank you, yaar. Not all the time. I'm a piece of shit sometimes, but largely, I'm trying to be more and more cooperative. Shrishti, मुंह में छुपा हंसते हंसते secretly तुम agree कर रही हो इस बात से. Okay. And action. देखो थेरेपी लेने में ना कोई गलत बात नहीं, पर स्ट्रॉन्ग का मतलब ये थोड़ा ना होता है कि लोग हेल्प नहीं लेते. आप अपने आप को देखो ना, फ्रेंड्स को बाद में देखना. बेटा ऐसे नहीं कहते, प्रेशर कौन डाल रहे, बट देखो आपके मम्मी पापा की भी कोई आशाएं हैं. भला तो आपका ही है ना, कल को आप अकेले रह गए तो ये फ्रेंड्स थोड़ा ना हेल्प करेंगे आपको, है. रोल साउंड, रोल कैमरा एंड ऑर्डर. वैसे तो मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करती, बट यू नो लाइक एटलीस्ट फर्स्ट एंड लास्ट नवरात्रि आई कीप. मैंने सामुक चावल की खिचड़ी खाई थी दोपहर को. चावल सामुक चावल, सांभर चावल, सावा सांबक It's like, you know, only Q2s understand. But I think ये क्या हर चीज. This is the video जिस पे संतु हमें नचाना चाहता है. Very tough यार. Girls, how excited are you guys on a scale of 1 to 10?
funny करना ना guys. Oh gosh, चलो, I've चलो। been trying to avoid doing dances for Instagram since perhaps and Everything now. is on the vlog. Yeah. Santu's gonna make me dance for Instagram. Oh my god, I'm so scared. It is not a very pleasant thought. You've danced before also. Yeah, like a fucking joke. Last time I danced, चलो, people चलो, commented, चलो, what's phone wrong रखो। with your thighs? Phone रखो। I got fat shamed after I did a video with Aya. एक मिनट. बहन जी क्या प्रॉब्लम है? लुक नहीं पूरा आ रहा. आपने व्रत रखे हैं? आपने नवरात्रों के? मैं सिर्फ फर्स्ट और लास्ट रखती हूँ. सच बोल दो, आपके दिल में ना था ही नहीं शेयर करना, कम्युनिटी वो वाला जो सेंस होती है ना, वो नहीं है नहीं आप. मैंने कुछ खाया नहीं, मुझे लग रहा है इसलिए आपका सड़े हुए बोर्ड लग रहा है. साढ़े बहन जी ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज हो जाएगी आपको. आप समझ नहीं रहे हो, तबीयत खराब होती है ज्यादा मीठा खाने से. एक तो ये ना लोगों को गलत फहमी है, डायबिटीज मीठा खाने की वजह से नहीं होती, डायबिटीज होने के बाद मीठा नहीं खाना चाहिए. ये आप लॉजिक देखो मैडम जी, नमकीन जो है ना बेस्ट है. शक्कर खोर जो होंगे उनको तो मीठा ही अच्छा लगेगा. क्यों देखो डाली? तेल मत डालो फिर. किसने कहा है भाई तेल डालने के तो लिए? बिना तेल के कैसे खा लेंगे फिर आप नमकीन? ले, नमक और तेल का क्या कनेक्शन है यहाँ पे? ऐसे तो आप कह रहे हो जैसे मीठे और क्या कहते हैं वो गोभी में कनेक्शन है. Well, I've decided that after putting myself through the pressure of creating content, given that I wasn't able to do that very actively right now and think of like interesting ideas, I've come to the conclusion that I'm still kind of like feeling happy only because just being in their company is fun. Next time maybe I'll actually write ideas down before I show up because I think I also got very preoccupied with like making this vlog that I did not make like content. But anyway, next time. But not regretting this at all. So guys, I'm excited that on the second slog I am being featured, and thank you so much. And This was an absolute pleasure for me. Thank you so much guys for watching. If you liked this video, please comment on it. It's a huge motivator for us. Yes. We'll make more such videos. Absolutely. We'll probably collaborate more also. Yes, so let we us should. know. Like this video, share it, and subscribe to my channel and Sukriti's channel Yes, as well. thank you. Along with Shireen's channel. Okay, she just started her channel, so please subscribe to that as well. See you. Bye.